मी तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो स्टार्ट आवर सेशन और बात करेंगे। बहुत चीज़ें बात करने के लिए। लाइक कैट का रिजल्ट आ चुका है, कल ही आया है कैट का रिजल्ट। उस पर तो बहुत लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, डू लेट मी नो इफ आई एम परफेक्टली विजिबल एंड ऑडिबल फर्स्ट बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो #परफेक्ट। चलो गाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये क्या है सर और क्यों है सर? बेसिक ग्राफ सीरीज। एजेंडा क्या है? हर एक क्लास का कुछ ना कुछ एजेंडा होना चाहिए। बिना एजेंडे का कोई क्लास नहीं होना चाहिए। एवरी क्लास शुड सर्व सम पर्पस। सो बेसिक ग्राफ सीरीज जो है ना, इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम लोग रफली 40-50 ग्राफ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक वाले। व्हेन आई से बेसिक, व्हाट डू आई मीन? हमारा टेबल हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया एंड लाइन ग्राफ हो गया। ये केवल उसके लिए है, ओके? इनकी प्रैक्टिस, दैट्स इट। इनकी प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल किधर है ये आपको? तो दिस वुड बी हेल्पफुल इन ओमेट्स है। लेकिन ऐसा कोई टारगेट नहीं है अगेन कि सर ये स्नैप के लिए है क्या, या सैट के लिए है क्या, या सीमैट के लिए है क्या, टिस के लिए है क्या। ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है। When you start learning DI, good morning, Vineet, good morning, stupid. Hello, Anuj. So when you start learning DI ना, तो सबसे पहले आपको एक हैबिट डेवलप करनी होती है कैलकुलेशन की, क्वेश्चन रीडिंग की, क्वेश्चन सॉल्विंग की, ट्रिक्स एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो सब करना होता है बाद में। स्टार्ट में आपको कैलकुलेशन की हैबिट डेवलप करनी होती है एंड दिस इज़ फॉर द सेम पर्पस। ये जो सीरीज़ है, इन दिस सीरीज वी विल स्टार्ट सॉल्विंग टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस के फॉर्म में, ताकि हमारा थोड़ा सा base build ho for all the examinations. So this is relevant for almost all the examinations. Okay, अगर आप CAT 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, you guys can attend the session. हमारा जो स्टैंडर्ड स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट, ये उसमें नहीं होगा, मॉर्निंग में होगा। प्रैक्टिस सेशन सॉर्ट ऑफ थिंग है। जो लोग बाद में देख रहे हैं, ओके, हैंग नहीं हो रहा ना? Connected. So I hope I'm back. I'm back ना? हाँ जी सर, you are back. अनुज, 6 बजे की क्लास यार हो जानी चाहिए थी 2-3 दिन पहले ही, लेकिन आज अपडेट हो जाएगा यार। मैं भी ना डेली टीम को बोल रहा हूँ, आज अपडेट हो जाएगा। ये ना 18 को ही शुरू हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सम गॉड नोज व्हाट रीज़न, 3 दिन पहले भी हम लोगों ने उसको अच्छे से मैंने फॉलोअप लिया था और पुश किया टीम को। तो 22 आज का ही डेट डाल रखा है, तो होपफुली आज पब्लिश हो जाना चाहिए आज के डेट के लिए। Okay, so this serves the purpose for all the examinations, basic practice के लिए, OMETS and CAT 2023। ठीक है। हालांकि इस वाले सीरीज का कोई एजेंडा नहीं होगा सर, हम इतने तारीख तक ख़त्म करेंगे क्या, हमारा जैट में रेलेवेंट है क्या, ये सारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ओके, चलो, वेरी नाइस।
Okay, let me upload the PDF. अच्छा, जो लोग प्रेजेंट है यहाँ पे एक बार हैशटैग मी लिख दो, और अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो भी देख रहे हैं हैशटैग मी लिख दो फटाफट कमेंट बॉक्स में. तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे. ट्राई दिस वन. Okay. Uh, the question is in the form of tables. Good morning, Raja. I've given you roughly 4 to 5 minutes to attempt this question. कर लो एक बार. Okay, Anket, Sigma and Vineet, attempt करो. अच्छा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है 2 बजे 2 PM. डेटा सफिशिएंसी हम लोग करने वाले हैं. उसमें उसके जो भी थियरी होती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स with enough number of questions practice on data sufficiency. Don't forget to attend that session. वो एक सेशन के बाद 2 सेशन है, एक दोपहर में है और एक रात को रखा है. We have 2 sessions back to back. 1.5 hours का होगा सेशन. But all your doubts regarding data sufficiency will be taken care of in those 2 sessions. चलो, hashtag 1 and then your answer for this question. Hashtag 1 and then your answer for this question. और अगर क्लास में बैठे हो ना, डीए की क्लास में, 2 चीज़ें ध्यान रखो. फर्स्ट इज टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इट्स एब्सोल्युटली अलाउड. सेकंड इज कि डू इंगेज योर सेल्फ. बस बैठे मत रहो, डू इंगेज योर सेल्फ. एंड यस, अनअकैडमी के रिजल्ट्स इस साल के बहुत शानदार है. 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे रिजल्ट्स. हम लोग कोई ना कोई तो पब्लिश करेगा ये रिजल्ट, ठीक है. एक बार रिजल्ट्स पब्लिश हो जाए तो फिर मैं मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आप लोग के साथ शेयर करूँगा. 1-2 दिन जाने दो, ऑफिशियली पहले हो जाए उसके बाद फिर बहुत शानदार. और डीएलआर में तो माशाल्लाह चलो, shall we attempt this question? इसको ये फर्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं साथ में, ठीक है. सम ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये है क्या एग्जैक्टली? ये ना एक टेबल है, वेर इन दिस टेबल में वी हैव 5 कॉलेजेस 1 2 3 4 5 PQRST. उस कॉलेज में 2 मोड में एग्जाम हुआ है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन. ऑनलाइन आपका फेवरेट मोड एंड ऑफलाइन. So what they have given in the first column is number of students appeared in offline mode. Okay, so 620 students from college P appeared in offline mode. Very nice. Remaining 69% students. So number can be represented in absolute form or in terms of percentage. Okay, so
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ऑफलाइन मोड, वो आपको एक नंबर गिवन है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ऑनलाइन मोड, वो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है. एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्वालिफाइड अमंग दोज हु अपीयर्ड थ्रू बोथ ऑफ द मोड्स. मतलब जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी मोड्स में मिला के जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो ये गिवन है 240. मतलब इसमें ऑफलाइन से भी डिस्क्वालीफाइड बच्चे हैं, ऑनलाइन से भी डिस्क्वालीफाइड बच्चे हैं. ओके सर. अच्छा एक चीज ध्यान दो, 69% बच्चे जो हैं पी में दे हैव अपीयर्ड इन ऑनलाइन मोड. सो रिमेनिंग 31% जो है, remaining 31% they must have attempted the exam in offline mode. So this 620 is as good as 31%. This 620 is as good as 31%. Okay, so I can proudly write 31% of P. I can make this statement now. 31% of P is nothing but 620. From here you can calculate P. P would be 2000. Ayana, yes sir. So total number of students from college P were how much? 2000. On the same note, if 65% of the students from college Q appeared the exam in online mode, remaining 35%, this would be 35%, they appeared the exam in offline mode. So 35% of X, 35% of P, I can write this as 35% of P would be 560. Not P but Q. So how much would be this? Q would be how much? 1600 I believe. ये 16 टाइम्स में जा रहा है ना, 1600. Okay, so this is a total of 1600. बाय डूइंग सेम कैलकुलेशंस आप सभी कॉलेजेस का टोटल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं ना, बोलो यस सर. सो दिस इज 40%, दिस इज 50% एंड दिस इज 25%. ओके, टोटल कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 1850 by doing same set of calculations. This is 1320 and this would be, this is okay 2160. यहाँ तक समझा है ना? मतलब ये टोटल हम निकाल सकते हैं सब सारे कॉलेजेस के लिए, वो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल के रख लो एंड वी आर डन विथ इट. अगर यहाँ तक समझा तो लिखो हैशटैग समझा, अगर समझा है तो लिखो हैशटैग समझा. चलो ना, लेट्स मूव टू क्वेश्चन. इन कॉलेज आर, किस कॉलेज की बात हो रही है? इन कॉलेज आर. तो कॉलेज आर में ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कॉलेज आर में टोटल 1850 स्टूडेंट्स है, जिसमें ऑफलाइन है 740. ऑनलाइन कितने हो जाएंगे बेटा? कॉलेज आर में ऑनलाइन कितने हो जाएंगे छोटू? 1110. 1110. So in college R, the number of students who disqualified and appeared through offline mode is 180. Okay. Now जितने भी लोग ऑफलाइन मोड में हैं और ऑनलाइन मोड में हैं, इनमें से कुछ बच्चे पास हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल हुए होंगे, यस और नो? ऑनलाइन वालों में क्वालिफाइड एंड डिस्क्वालिफाइड होगा, ऑफलाइन में भी क्वालिफाइड एंड डिस्क्वालिफाइड होगा, करेक्ट? सो व्हाट इज गिवन? Students who disqualified and appeared through offline mode. So disqualified and offline mode. Disqualified and offline mode. This is 180.
ये 180 गिवन है। ओके, अच्छा ये 180 गिवन है तो हम लोग क्या, सॉरी, हम लोग क्या हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ दिस इज 180, दिस वुड बी 560, सम हैज टू बी 740 ना। Also, total disqualified students in R is how much? 390. 390 R में total number of students disqualified है, out of which 180 are in offline mode, remaining 210 must be from online mode, so this would be 900. They together must be 1110. This has to be 900. Okay, so ये पूरा मिल गया. What is asked in the form of answer? Then the number of students qualified and appeared through online. Qualified and appeared through online means 900. 900 is what percentage more or less than that of offline mode? Okay, 900 is what percent more, in this case, more than the students who qualified in offline mode. Students who qualified in offline mode is 560. So 900 is how much more than 560? This is what is asked. ये आपसे पूछा है. ओके, वेरी सिंपल. और क्या हो जाएगा आंसर इसका? 340 अपॉन 560 क्रॉस 100. इसका आंसर तो ये होगा ना, 900 माइनस 560 अपॉन 560 क्रॉस 100. This is close to 34, 56, 5.6. This is close to 60%. 60% more. 60% more. चलो ये समझा. Jump to next question. Try this one. Try this one. I've given you 3 minutes to start with. I've given you 3 minutes to start with. चलो, #2 and then your answer. Okay. #2 and then your answer. चलो,
Okay. Hashtag 2 and then the answer. Your time's up boys. चलो देखो आ जाओ. Read the question slowly. बहुत difficult नहीं है. Once you have the data in the, once you extract the data from the table, the questions are nothing but very basic questions of quant arithmetic. Here we are touching the concept of average. So the average number of students qualified in colleges P and Q. College P had a total number of 2000 students. The strength of college P is 2000, out of which 240 students were disqualified. How many were qualified from P? How many were qualified from P? P में से qualified, if you figure out, that would be 2000 minus 240. This is close to 1760. Okay. Now same from Q. Number of students qualified from Q. Q has a strength of 1600, out of which 280 students disqualified. So remaining 1320 students they qualified. Bolo yes sir. We need to figure out average of these two numbers. Average number of students qualified from P and Q. So that would be 1540. Average is 1540. Yes or no? Now 1540 is what percentage of total number of students who appeared from college T? From college T, total number of students appeared is 2160. So answer would be 1540. 1540 is what percentage of 2160? So my answer would be definitely 1540 upon 2160 cross 100. Yes or no? This would be close to how much? Check this out. 71 के आसपास हो रहा नहीं है. Yes, इसको निकाल दो इधर से. This is close to 7%. 7 times 216 cross 7 is close to 154 not. 71% is the answer to the question. 71% is the answer to the question. बोलो yes sir. चलो. Let's jump to next question. Attempt this one. I'll give you 4 minutes to attempt this question. Try कर लो. And hashtag 3 and then your answer. Hashtag 3 then your answer. अडॉप्ट कर लो. So total number of people, students in P were 2000, Q were 1600, R was 1850, this was 1320, and this is 2160.
We have roughly 90 seconds left. So boys, hashtag 3 and then answer. Quickly दे दो. अच्छा, कितने लोग हैं जो कैट 23 टारगेट कर रहे हैं और जो ओमेट्स टारगेट कर रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ ओमेट्स दिस ईयर? ओमेट्स वाले ओमेट्स लिख दो, कैट 23 वाले कैट 23 लिख दो. ओके, टाइम्स ऑलमोस्ट अप. चलो, लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले किस कॉलेज की बात हो रही है? बात हो रही है कॉलेज पी की. ओके, कॉलेज पी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? कॉलेज पी में टोटल स्टूडेंट है 2000. अब इन 2000 स्टूडेंट का ब्रेकअप क्या होगा? कुछ बच्चे ऑफलाइन, कुछ बच्चे ऑनलाइन. यस और नो? ऑनलाइन और ऑफलाइन में इनका ब्रेकअप है सबसे पहला तो. सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन में कितने बच्चे? ऑनलाइन में कॉलेज पी में है वी हैव दिस 1380 ना, 1380. एंड ऑफलाइन में वी हैव 620. ओके, अब देखो इसमें ना दोनों से ही कुछ बच्चे पास हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल हुए होंगे. यस और नो? पास एंड फेल मतलब क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड. चलो आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारे. इन कॉलेज पी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are disqualified in offline to online is 9:7. So offline disqualified is to online disqualified is in the ratio 9:7, and total number of students disqualified is 240. So 240 को 9:7 के रेशियो में आपको स्प्लिट करना है. So offline would be how much? Offline would be 135. ऑनलाइन वुड बी 105. बोलो यस सर. ये डिस्क्वालीफाइड वाले बच्चे हैं. ये टोटल डिस्क्वालीफाइड 240 जो है ना, उसका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में ब्रेकअप है. ऑफलाइन डिस्क्वालीफाइड इज 240, ऑनलाइन डिस्क्वालीफाइड इज हाउ मच? सॉरी, टोटल डिस्क्वालीफाइड इज 240, offline disqualified is 135 and online disqualified is 105. ओके, ये हो गया अपना. आई नीड दिस स्पेस, इसको निकाल देते हैं. फर्दर क्या गिवन है? फर्दर इट इज गिवन दैट 60% of the students who qualified in online mode are boys. Qualified online mode 60% are boys. मतलब ऑनलाइन मोड में क्वालिफाई करने वाले 60% आर बॉयज. सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड. इफ दिस इज 105, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस शुड बी 1380. सो दिस इज 1275. और ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 135, 620 टोटल है. दिस हैज टू बी 485. So what they have said is
60% of the students who qualified in online mode are boys. ऑनलाइन मोड में जिन्होंने क्वालिफाई करा है इसका 60% बॉयज है. So this is further divided in boys and girls. This is further divided in boys and girls. Boys and girls. Wherein 60% of this is boys. What is 60% of this? 255 cross 3, 765. 765. Okay. What would be this? This would be 510. Why? Because this plus this has to be 1275. And 40% of the students qualified and appeared through offline. Qualified and appeared through offline is 485. इसका 40% are girls. Yes. So इसमें भी boys and girls है. Boys and girls. ट्री में ट्री है. So 40% of this is girls. How much is this? 97 close to 194. So remaining 291. This is what we get. Okay. Now, what is asked? Find the difference between किसके बीच में. The number of girls qualified in online. Girls qualified in online is this 510 versus boys qualified in offline. Boys qualified in offline. ये. So you have to find out difference between this and this. This was asked. The difference between this girls who qualified in online and boys who qualified in offline. So 510 and 219 का difference was asked. 510 minus 291. 291. This is asked. What is this? 219 है. A was the correct answer to this question. A was the correct answer to this question. Chalo, let's move ahead. Attempt this one, a very easy one. 2 मिनट देता हूँ इसके लिए आपको. It's a very easy question. चलो hashtag 4 and then your answer. चलो टाइम्स अप छोटू. Okay, so find the ratio of number of students who qualified in P and S. P plus S qualified.
P plus S qualified is to Q plus R qualified निकालना था आपको. Q plus R qualified, ओके ये निकालना था. P plus S qualified is to Q plus R qualified. So P plus S qualified, P plus S में टोटल P में qualified कितना है छोटू? P में qualified है सर 2000 minus 240. S में qualified है सर 1320 minus 330. Q plus R 1600 minus 280. R में 1850 टोटल स्टूडेंट्स है. डिसक्वालीफाइड वाले माइनस कर दो 390. अब ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं. ओके सो लेट्स सॉल्व दीज. ये टोटल कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 3320 minus 570. ओके और ये टोटल है कितना? 3450 माइनस 670. तो 3320 माइनस 570 कितना है छोटू? 28. 20 माइनस 70 2750 is 2. And how much is this? 28 minus 20 का 50 and 70 का 20. This is 2780. 275 upon 278. Answer to this question was C. Answer to this question was C. So let's move to next question. Try this. In which college the difference between the number of students who appeared for the exam in the offline and online mode is maximum? ये तो इजी है ना, करो फटाफट. Do tell me the answers in the comment box. चलो in which college the difference between number of students who appeared for the exam in the online and offline mode is maximum? This is what is asked. Okay, तो PQRST ये है ऑफलाइन वाले सारे. हम ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं ना.
This is how much? 1380. uh, okay, this would be 104 not. ठीक है. This would be 1110. This would be 660 only, and this would be 1620. 1620. The difference is maximum है. जो डिफरेंस है मैक्सिमम किस में है? ई में मैक्सिमम है ना. ये डिफरेंस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का 540 एंड 1620. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिफरेंस मैक्सिमम किस केस में है? दिस वाज टू बी आंसर्ड is here. T was the correct answer to this question. T was correct answer to this question. Okay. Chalo, before moving to next set, एक दो important चीज़ें. Let me share these batches with you. Guys, target time batch 2023, CAT 23 के लिए है ये. You started this batch on November 30th. लैंग्वेज कंबाइंड हिंदी इंग्लिश दोनों. न्यू बैच है और 6 से 7 महीने में कवर हो जाएगा इंटायर कोर्स विद ऑल दोज मॉक्स डाउट सेशंस एवरीथिंग. जो भी चाहिए सब मिलेगा आपको. वी हैव 8 एडुकेटर्स हेल्पिंग यू इन दिस बैच. टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री. यू कैन कंसिडर दिस बैच फॉर श्योर. अच्छा, उस बैच का यूएसपीज क्या है? 100% वो तो कवर होता है सब में. ठीक है. हाँ, लाइव क्लासेस भी है एंड इफ़ यू मिस लाइव क्लासेस आप रिकॉर्डेड देख सकते हो. अगर आपको 2-3 महीने बाद कोई क्लास पीछे की देखनी है वो भी देख सकते हो. 25,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी हैव 100 प्लस एक्सटेंसिव मॉक्स. सेक्शनल वाइज है, फुल लेंथ है, सब है. मेंटरशिप बाय कैट एक्सपर्ट्स एंड IIM ग्रेजुएट्स. अपार्ट फ्रॉम द एडुकेटर्स टू मेंटर यू, we have alumni of top IIMs to guide you as well in your profile building and all. So this is complete package. You can go for this if you are planning for CAT 2023 or any exam in 2023. अभी के लिए ऑफर है. क्या ऑफर है? अर्ली बर्ड ऑफर है. 30% का सेविंग्स है ऑन 12 मंथ एंड 15 मंथ सब्सक्रिप्शन. कितना हो जाता है ये? बहुत सस्ता हो जाएगा फिर तो. Oh my god. You get a plus in only 19,000. A year's plus is in only 19,000. Only 19,000. ये प्राइस 3 साल पहले था. ये प्राइस 3 साल पहले था. Iconic, a year's Iconic would be 31,680. But I would recommend कि आप 15 months के साथ जाना. क्यों? क्योंकि you need subscription till January 2024. क्योंकि कैट होगा नवंबर में एंड देन रिजल्ट आएगा, देन जीडीपीआई, वीडियो असिस्टिंग जीडीपीआई एज वेल, वो जैन वगैरह में होता है. सो गो विथ 15 मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन. प्राइस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. 19,000 एंड 1,500 का डिफरेंस है प्लस में एंड रफली 3,000 का डिफरेंस है आइकनिक में. कॉम्बैट तो देना ही है और यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन द कॉम्बैट. टॉप रैंक होल्डर्स को वी ऑलवेज रिवॉर्ड. ओके, तो ये भी टारगेट टाइम बैच. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम November 30th. वेरी नाइस. प्राइसिंग देख लेते एक बार फटाफट. प्राइसिंग तो आपको दिखा दिया ना ऑलरेडी. चलो लेट्स जंप टू नेक्स्ट सेट. ट्राई दिस. आई एम गिविंग यू वो कितना 3 minutes टू स्टार्ट विथ या 4 minutes टू स्टार्ट विथ. चलो चलो ट्राई कर लो. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अच्छा, द क्वेश्चन इज विजिबल ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है विजिबिलिटी में.
So don't forget to attend the session at 2 p.m. today on data sufficiency. मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ. हेलो. अरे नहीं सर, अभी कोई पार्सल नहीं है आज. ओके. और मैं हर डेली क्लासेस लिया करता था, लेकिन पिछले 4-5 महीने से फॉर मेनी रीजंस, एक तो माई हेल्थ कंडीशन वॉज नॉट राइट, तो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस लेनी कम कर दी थी. प्लस की क्लासेस में लेता था केवल. आई हैड लिमिटेड टाइम, वो मैंने प्लस में इन्वेस्ट करा था. सो अभी से वापस रेगुलर स्टार्ट किया ऑन यूट्यूब. अगर आप फॉलो करोगे तो आपको वीक में 5-6 दिन क्लासेस दिखेंगी यूट्यूब पे ऑन द चैनल अनअकैडमी कैट. ओके. टारगेट इज नेक्स्ट ईयर कैट. ये इस साल का था कैट तो हो गया. Target is next year CAT, and I'll publish few courses for that. So answer this. Okay. देखो, मैंने आपको मेरी शुरू में बताया ना, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर कैट 23. सर कैसे? तो कंसिडरिंग दैट यू guys आर बिगिनर, these questions are good enough to develop the habit of calculation. अभी ये जो सीरीज़ है ना, जो मॉर्निंग में सीरीज़ है, ये बार ग्राफ सीरीज, बेसिक ग्राफ सीरीज़, इसमें हम लोग 35-40 ग्राफ्स करेंगे. ठीक है. इससे ना सॉल्व करने की हैबिट आ जाएगी आपको, कैलकुलेशन, थोड़ा रीडिंग हैबिट डेवलप होगा. डीएलआर में डीएलआर में रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. होता क्या है ना कि एक पैराग्राफ है, डीएलआर पैराग्राफ में, सपोज डीएलआर का कोई पैराग्राफ है, 4-5 सेंटेंस है. नॉर्मल स्टूडेंट उसको फटाफट रीड आउट कर लेता है विदाउट जनरेटिंग द फील ऑफ द क्वेश्चन. जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4-5 महीने सीरियसली डीएलआर प्रिपेयर करते हो ना, एंड देन अगेन इफ यू रीड द सेम पैराग्राफ, इस बार आप उसको दूसरे तरीके से रीड करते हो, आप स्लो रीड करते हो, उस स्टेटमेंट का मतलब उधर ही समझने की कोशिश करते हो. ऐसे क्या फर्स्ट बिगनर लोग क्या करते हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं. अच्छा ठीक है, द बार ग्राफ शोज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदा एंड राहुल इन 5 डिफरेंट स्कीम, फटाफट पढ़ लिया. लेकिन जब आप स्लोली पढ़ोगे ना, साइड बाय साइड फील करते जाते हो. ये जो हैबिट डेवलप करेंगे हम इस बेसिक ग्राफ सीरीज में. ओके. एंड देन यस, ये सारे टॉपिक्स का हम लोग थियरी डिटेल में वापस करेंगे जब कैट 23 का प्रॉपर कोर्स आएगा. दिस इज वेरी मच रेलिवेंट टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. चलो आ जाओ. सो किसी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया. सो ग्राफ्स के साथ एक चीज क्या है ना, कि जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स मतलब क्या? ग्राफ्स मतलब टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट.
ठीक है, एंड द मिसलेनियस वंस एज वेल। अच्छा, ये टेबल्स के क्वेश्चन अलग होते हैं क्या? नहीं। बार ग्राफ के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये बस डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यू कैन रिप्रेजेंट अ डेटा इन टेबल, यू कैन रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ डेटा इन बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिसलेनियस। So once you extract the data from these formats, suppose bar graph का question है, and you extract the data, you understood the table, you understood the bar graph, and you are capable of extracting the data. After that what? After that ये जो questions होते हैं ना, ये जो question है, या फिर ये जो question है, या फिर ये जो question है, these questions are nothing but very basic questions of quant, very basic questions of quant. So if we reverse this, we can say कि इस क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा चाहिए वो आप यहां से लेते हो, दैट्स इट। इस क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा आप यहां से उठाते हो, ठीक है। इस क्वांट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा आप यहां से उठाते हो, करेक्ट। सो अब इस क्वांट में सर हम लोग क्वांट का भी कौन सा एरिया? मेजरली अर्थमेटिक, मेजरली अर्थमेटिक। सो अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक को इन किसी भी फॉर्मेट के साथ क्लब किया जा सकता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में किससे क्लब है? इसमें इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने बार ग्राफ के साथ क्लब कर दिया है। तो आपको दो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा, एंड सेकंड, द नॉलेज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द नॉलेज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, दोनों में से एक भी मिस हो रहा है, आपको डेटा क्रैक करना नहीं आ रहा है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। आपको SICI के कंसेप्ट नहीं पता है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर DI। वेरी नाइस। चलो देन, अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ राहुल एंड नंदा, क्या है? दो बार ग्राफ है, बार ग्राफ 1, बार ग्राफ 2। बार ग्राफ 1 में द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल एंड नंदा इज गिवन इन 5 schemes. These are 5 schemes. Okay, these are 5 schemes: U, V, W, X and Y. U एक स्कीम है जिसमें राहुल एंड नंदा ने मिलकर 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। U is a scheme wherein Rahul and Nanda has invested a total of 1,20,000. Okay. बार ग्राफ 2 से आपको क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ नंदास इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। सो यू में नंदा का इन्वेस्टमेंट वॉज 20%, यू में नंदा का इन्वेस्टमेंट वॉज 20%। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यू में टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, यू में टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। हाँ जी सर। नाउ यू में राहुल का इन्वेस्टमेंट, यू में नंदा का इन्वेस्टमेंट, यू में राहुल का इन्वेस्टमेंट एंड यू में नंदा का इन्वेस्टमेंट। राहुल का इन्वेस्टमेंट इज 80% बिकॉज 20% नंदा का इन्वेस्टमेंट है, 20% ऑफ दिस। अच्छा, इसको ना 120K लिख देते हैं यार, 120K। ओके, सो नंदा का इन्वेस्टमेंट इज 20% ऑफ दिस, मीन्स 24K, and Rahul ka investment would be 80% of this, that would be 96K. इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके यू कैन फिगर आउट द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ राहुल एंड नंदा एंड देन फर्दर यू कैन सॉल्व इट। ओके, हैविंग सेड दैट, क्या था क्वेश्चन? प्रेरणा, चलो आ जाओ, ठीक है। सो राहुल एंड नंदा इन्वेस्ट इन स्कीम W which offers a simple interest at a certain rate of interest for 5 years.
Find the difference between the interest earned by Rahul. Sorry, not find the. And the difference between interest earned by Rahul and Nanda is 20,000. Find the rate of interest. ओके, स्कीम डब्ल्यू की बात हो रही है। स्कीम डब्ल्यू में और राहुल ने टोटल कितना इंटरेस्ट जनरेट किया होगा बेटा? स्कीम डब्ल्यू में राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना है? स्कीम डब्ल्यू में राहुल का इन्वेस्टमेंट है 75,000 ना। 1 लाख का 25% नंदा का इन्वेस्टमेंट है, 75,000 राहुल का इन्वेस्टमेंट है। So I can proudly write 75,000 P into R। रेट निकालना है, टाइम 5 साल का है, 5 साल का पीरियड है ना, 5 years। उप्स, कितना आया VRC में? PRT अपॉन 100। ये दिस इज द इंटरेस्ट जनरेटेड बाय राहुल। एंड नंदा का इंटरेस्ट कितना है बेटा? नंदा का इंटरेस्ट है 25,000 P इंटू R इंटू T बाई 100। ये नंदा का इंटरेस्ट है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज हाउ मच? डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज हाउ मच? 20,000। 40%। व्हाट अबाउट क्वांट एंड DI? वेरी नाइस। क्वांट में कितना है छोटू? ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज टू मतलब 75,000 25,000 इंटू R इंटू 5 अपॉन 100। दिस इज 20K। 93.48। नहीं यार, डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है। एमरो तक डिफिकल्ट है। चलो सॉल्व दिस। 50,000 इंटू R इंटू 5 अपॉन 100 वुड बी 20,000। ये निकाल दो, ये निकाल दो। R वुड बी, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, 8%। चलो, shall we move to next question? हाँ, बट आई नो दे डोंट हैव सेक्शनल कटअप्स, बट स्टिल बहुत 40 के भी नीचे है ना आपका? कितना है? 40 के नीचे दिखा था मुझे शायद। अच्छा 40 है, 40.16। नहीं देते हैं कॉल यार इतना कम पे। जनरली देयर इज नो अंडरलाइंग प्रिंसिपल, बट स्टिल दे डोंट गिव कॉल्स अगर किसी भी एक सेक्शन में इतना कम हो तो। लेकिन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस आर रेयर। एक बार मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, ठीक है दिनेश, दर्शन, एक बार टेलीग्राम पे कनेक्ट करो। लेट मी सी, मतलब हाउ आई कैन गाइड। टेलीग्राम पे एक बार कनेक्ट कर लो, ठीक है? हाई ड्रॉप कर दो टेलीग्राम पे विथ योर नेम। Meanwhile, students, attempt this question, the second one. I'm giving you 2.5 minutes to solve this question.
What is the respective ratio of investment of Rahul in scheme V and X to that of Nanda in scheme V and X? Chalo, hashtag 7 and then the answer. चलो डन. टाइम सब वैसे तो सॉरी. चलो मैंने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लिया है अपने लिए. वी और एक्स. वी में टोटल इन्वेस्टमेंट इज 140, यहाँ से मिला. एक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट इज 110, यहाँ से मिला 110,000. ओके. राहुल एंड नंदा. अब नंदा का शेयर मुझे दोनों में पता है, हाँ या ना? नंदा का शेयर वी में कितना है? 40%. तो 40% ऑफ दिस इज हाउ मच? 56. यस सर. नो. यस सर. तो रिमेनिंग वुड बी राहुल्स इन्वेस्टमेंट. ये कितना हो जाएगा बेटा? 4484. 140 का 40% 56 होता है सर, तो 4484 हो गया राहुल का ये. ठीक है. अब इसमें एक्स में नंदा का इन्वेस्टमेंट इज 41,9/11. व्हाट इज दिस 41,9/11? 451, 460/1100, 460/1100, 460/11 क्रॉस 110. तो ठीक है, ये 10 टाइम्स 46 है ये. दिस इज 46. रिमेनिंग कितना हो गया ये? रिमेनिंग हो गया 64. रिमेनिंग 64 राहुल का. रिमेनिंग 64 राहुल का. 41,9/11%. ठीक है. ये सब के टर्म उसमें है छोटू. 140 के, 110 के. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. तो आपको निकालना क्या था? टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदा, ये निकालना था. प्रतीक अवस्था सर. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नंदा 148 from here and 102 from here. We can simplify this down to 74/51. प्रतीक सर, हमारा नमस्कार स्वीकार करो. चलो बस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नमस्कार स्वीकार करो.
So if scheme U offers compound interest at 10% per annum compounded half yearly, what would be the difference between the amounts earned by Rahul and Nanda at the end of 1 year? अगेन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं पता है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस दीज टू बार ग्राफ्स. So you have 1 more minute to attempt to solve this question. हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ सर बिल्कुल. आप मुझे 10 मिनट में कॉल कर सकते हो क्या यार? मैं एक मीटिंग में हूँ, बस 10 मिनट में. हाँ जी, आशीष सर से बात हो रही है. हाँ थैंक्स यार, थैंक्स. चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. सो उसके पहले आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है. कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है. 10% फॉर 1 year. Suppose 10,000 is your investment. Okay, 10% compounded annually. Compounded annually. What would be the amount? The amount would be 10,000 multiplied by 1.1. Okay, 10,000 में 10% का इंक्रीमेंट निकाल के आपको ऐड करना है. तो 10% वुड बी द इफेक्टिव चेंज आफ्टर 1 year. बट ये अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देते हैं ना, ये अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर देते हैं तो 10,000 5% एंड 5% का ग्रोथ 2 बार हो जाता है. 5% एंड 5%. So now the calculation would be 10,000 cross 1.05 cross 1.05. Okay. So the effective change is 10.25. एक साल में जो 10% का चेंज होता है इधर, that effectively is 10.25% over here. Okay. So we are going to use this concept. We are going to use this concept जो compounded half yearly का concept है.
यू विल लर्न दिस. अगर आपको नहीं, जिनको पता है दे विल अंडरस्टैंड दिस, जिनको नहीं पता है दे विल लर्न दिस व्हेन दे स्टडी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो अमाउंट विथ स्कीम यू की बात हो रही है. सो राहुल एंड नंदा एट द एंड ऑफ 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. तो राहुल के पास क्या अमाउंट होगा? राहुल के पास जो अमाउंट होगा दैट वुड बी, यू में राहुल का इन्वेस्टमेंट इज 96K, 96,000 into 1.05 into 1.05. This would be the amount with Rahul. Rahul has 20% is with Nanda, 20% of 1,20,000, 80% of 1,20,000, which is 96,000. 96,000 cross 1.05 cross 1.05. 5% का increment in both of the cases. This would be the amount with Rahul. The amount with Nanda would be how much? That would be 24,000. 20% of 1,20,000 cross 1.05 cross 1.05. And the difference between these two values would be the answer. Difference between these two values would be the answer. So that is Rahul का amount minus Nanda का amount is 72,000 क्रॉस 1.1025. ये कॉमन ले लिया, दिस इज 1.1025, इनको माइनस कर दिया 72,000 एंड दिस इज क्लोज टू, दिस इज एग्जैक्टली ए, दिस इज एग्जैक्टली ए. ओके, so this was this question. We will continue this basic graph series tomorrow as well, 10 a.m. in the morning. Don't forget to join 2 p.m. for the data sufficiency session, guys. Okay. So having said that, let's sign off for the day. Not day, let's sign off with this session. We'll meet again in next